Hello 12th class. 12th class, we have to start the book Macroeconomics and it is your first chapter, Introduction. Meaning of macroeconomics. The term macro in English has its origin in the Greek term macros, which means large. Students, you have already read about microeconomics in 11th class and this is a macroeconomics. Just like microeconomics is the study of economic issues at the micro level, and so this is the study of economics issues at the macro level. So in the words of M.H. Spencer, macroeconomics is concerned with the economy as a whole, a large segment of it. In macroeconomics, attention is focused on such problem at the level of unemployment, the rate of inflation, nation's total output and other matters, because in which we are study economy as a whole, so we have to talk about the economic issues at the whole of the unemployment, of the poverty. So these are the second topic is how macroeconomics differs from microeconomics. मैंने पहले ही बताया आपको, आप पहले माइक्रोइकोनॉमिक्स रीड कर चुके हैं बेटा, अब हम मैक्रोइकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं. सो वी हैव टू स्टडी द डिस्टिंक्शन मीनिंग डिफरेंस between micro and macroeconomics. So the first difference is between the bases of the study. Students, in microeconomics you study the economic issues at the individual level, a small microorganisms, but macroeconomics we study about the economy as a whole. The second is economic variables. Microeconomics uses macro as demand or producer, one consumer's demand and one producer supply. But in macroeconomics we study about the aggregate demand and aggregate supply. These are your chapter of this book also. The third is economic agents. Economic agents are just like the individual economic agents. In the micro are the consumers and the producers. But at the whole level, RBI, the commercial banks, SEBI, TRAI, these are the economic agents who talk about the economic issues. Fourth is degree of aggregation. In microeconomics, there is a limited degree of aggregation. For example, if I am talking about the plus 2 class, there are 10 students in the class, then we can say it is a microeconomics. But at our main concept, we are studying about the 10 students, then sometimes this is called a limited degree of aggregation. And you know very well, microeconomics is a study of the whole, so aggregation is compulsory in macroeconomics. The next is a different set of assumptions. Microeconomics and macroeconomics are based on a different set of assumptions. Certain variables are assumed to be constant in micro, whereas they are assumed to be changed in macro. And certain variables that are assumed to be constant in macro, they are assumed to be changing in micro. कुछ एक issues हैं जो हम कहते हैं कि माइक्रो में कांस्टेंट है, मैक्रो में वो वेरिएबल्स हैं, और कई बार हम बोलते हैं मैक्रो में जो वेरिएबल हैं वो माइक्रो में आकर स्टैटिक हो जाते हैं. किस तरह? देखिए, जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मुझे नहीं लेना देना टोटल आउटपुट से, एम्प्लॉयमेंट से, पॉवर्टी से, बट जब गवर्नमेंट बात कर रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तब गवर्नमेंट को इंडिविजुअल से लेना देना नहीं है, पूरे देश की बात की जाएगी बेटा एक साथ. 6 पॉइंट सेंट्रल इशू. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है? अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, इकट्ठा करना है अपने रिसोर्सेज, और एक ही रिसोर्स है इकोनॉमी में, कौन सा? मनी. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो देश के लेवल के आउटपुट को देखना है, एम्प्लॉयमेंट को देखना है, पॉवर्टी को देखना है. 7th, मेथड ऑफ स्टडी. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात होती है. फॉर एग्जांपल देखिए, अगर किसी चीज के रेट इंक्रीज हुए हैं तो पूरे देश में एक साथ हुए हैं. बट इन केस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स समटाइम्स हमारे साथ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी हो जाता है कि समटाइम्स हमें कोई चीज है जो 2 रुपए सस्ती मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल. 8th is micro and macro paradox. Sometimes a thing, a talk which is looking at the very good in the micro, can change the meaning in the macro. Just like one person is there who is doing the saving. It is a part of the micro level, it is the best part. But at the macro level, if all doing the saving, then what are mean for the restaurants, what are mean for the ACs, cars, luxury goods, who purchase them?
तो यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जब हम देश की बात करते हैं तो माइक्रो में जो बात हमें ठीक लग रही थी वही मैक्रो में आकर क्या लगने लग जाती है, गलत लग